wherever you are. We extend you a very warm welcome on Sunday evening, 4 minutes past 5 p.m. Indian Standard Time. And today is 359th webinar, Making Education Relevant. Now, ladies and gentlemen, this particular series, which we bring to you on Sunday evening, because Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we keep discussing on students, youth, education, skills, competencies, and whatsoever we can think of. But ultimately, entire education climax is either you start up, you stand up, you become entrepreneur, you have self-employment, or whatever you plan to do. So the micro, small, and the medium enterprise, which is basically the largest global confluence which we have got world over. So this evening, under the dynamic and the dedicated leadership of Ravindra Nath, the former chairman of the MSME sector, when I talk about NSIC, under the aegis of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise, we extend a very warm welcome to Mr. Deepak Gaur, who is the founder, latest, when I talk about iGlobal. Wow, that's great. And today's topic is funding options to micro, small, and the medium enterprise. So, ladies and gentlemen, let me quickly roll over. International Chamber for Service Industry extends you a very warm welcome. It's a pleasure to have all of you with us. From morning till evening, we are live with all of you any point of time. This is the canvas for the entire week where you can see all the programs, whatever we are doing, all 7 days. And don't forget, today after this program, we have got a very special program coming live all the way from the United States, 8 p.m. today. That is in the evening, Indian Standard Time. Now, ladies and gentlemen, we had 100th webinar. That was Happy Independence Day. That was again when I talk about micro, small, and the medium enterprise. We had Beauty and the Wellness Sector Skill Council with us that day. Then we had the Management and Entrepreneurship and Professional Skill Council with us. Nowadays, we are doing a program on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday again, when we talk about micro, small, and the medium enterprise with Mohit Soni, the CEO of Media Entertainment Sector Skill Council. And then we are also doing a special program every Friday for you if you want to start any venture related to water-related activities, water strategies, water management. And then, of course, if you want to come in yoga, meditation, naturopathy, organic, Ayurveda, whatsoever you can think of, every Saturday, we are also talking about micro, small, medium enterprises, and you can think of coming over there. This is the wonderful program. Don't forget, join us tonight, Arts, Appreciation, and Music in Education. That's today, Sunday, 22nd of November, 8 p.m. Presentation and performance live coming from United States by Dr. Connects. And our chamber feels whatsoever human mind can conceive and believe, it can achieve. Ladies and gentlemen, micro, small, and the medium enterprise, wonderful ministry, doing great job. And all the schemes for the youth, they were discussed last week in a special program by Ravindra Nath, our chairman. Now, Ravindra Nath, he served as chairman and managing director of the NSIC, a public sector enterprise of Government of India, under the aegis of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprise till September 2018. Besides that, he also held various positions of the corporate head of finance in public, private, and he has over 3 decades of experience in various areas of finance, accounts, and management. He has worked on various initiatives to achieve inclusive growth in the country, particularly in the micro, small, and the medium enterprise. Shri Nath was actively engaged in promotion and development of MSMEs, as well as entrepreneurship development, creating collaborative environments to promote technology transfer, joint ventures, etc., between MSMEs, both in India and overseas. And he took lots of ventures abroad to different countries during his dynamic leadership. We extend a very warm welcome to Mr. Deepak Gaur this evening. He's a mentor, he's investor, he's entrepreneur, author, founder, debt and equity funding, and he's the founder, latest iGlobal. Mr. Deepak Gaur, he is an author and creator of the Jet Funded program, which provides step-by-step today's way of raising money for business owners.
He's a mentor of change with the Atal Innovation Mission, Niti Aayog, Government of India. As a core member of the leading business association, IAMSME of India in the past, he has been instrumental in the growth of the MSME in India and Bangladesh. He helped businesses to raise over 2,000 crores. He is associated with over 5,000 fund providers. Now, ladies and gentlemen, with these words, join me in welcoming and extending a very warm welcome. And I request Ravindra Nath ji to kindly take on the floor, give the initial opening remarks of the vision of the area and the MSME sector. And thereafter, we go to our today's distinguished guest. With these words, Ravindra Nath ji. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Dr. Gulshan Sharma. Well, it's indeed a pleasure to be on this program every Sunday. And so very important is the topic of today, funding options for MSMEs. And we have such a distinguished guest with us. But before I welcome my distinguished guest for the day, I would be failing in my duties if I do not compliment Dr. Gulshan Sharma, because what I find is he has crossed the 350th mark in terms of the webinars. Sir, if you remember, I have always been comparing you with Sunny Gavaskar. But when you crossed to 350, I am reminded of another brilliant cricketer and from just across the border, Hanif Mohammad. You must be remembering him. And Hanif Mohammad played a great innings of 337. He batted for 16 hours at the crease in a test match which was held from, it was the first test match. It was a 6-day match. It was held from 17th to 23rd January, 1958. I wasn't born at that time, but I distinctly remember that this was such a great innings. And the biggest thing is, even till today, Hanif Mohammad carries this record of playing the longest innings in a test history. So same way, I'm sure there would be nobody to beat the record being set by Dr. Sharma. So compliments to you, sir. And it's indeed a pleasure for me to be on these programs with you every Sunday. And jointly, we will be doing our best through our chamber to assist the MSMEs, whether existing or those who are willing to become. And that is what made me request our panelist for today, our guest for today, Shri Deepak Gaur ji. Sir, as you rightly said, Mr. Deepak Gaur is a man with a very big profile. So you say you look biologically young. He is indeed young. But his accomplishments till today make me feel proud that I came across him. And I remember, sir, we were together in Bangladesh, where we had gone for a program. I had gone to meet the embassy over there for setting up an incubation center. And Deepak ji had also was a part of the team from IAMSME of India. And we were there in various programs together. A mentor, an investor, an author, and the list goes on in the number of hats which he wears. And I'm sure all our panelists, both from India and abroad, would be very eager to listen to this great guru, a financial wizard, I must say, when it comes to MSMEs. And he's going to give them the solutions which they all eagerly look for. Deepak ji, let me just mention to you that not only the existing MSMEs are there, very eager to hear you, there are several other people from the schools and colleges whom we assist in, and the principals, as I told you, are more than eager कि भाई मंत्रालय के प्रोग्राम्स के द्वारा हम इंक्यूबेशन सेंटर्स तो लगा लेंगे, हम अपने युवाओं को उस पाथ पे ले आएंगे जिस पाथ के द्वारा वो एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक उद्यमी बन सकते हैं, एक जॉब प्रोवाइडर बन सकते हैं, एक जॉब सीकर की से दूरी रख सकते हैं. पर जैसे वो कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, भैया सबसे बड़ा रुपया. तो वो रुपया कहां से आएगा? तो देवी और सज्जनों, मैं आपको आमंत्रित करता हूं इस प्रोग्राम में और ये भी बताना चाहूंगा कि रुपया जो है
वो हमारे दीपक गौड़ जी आपको बताएंगे कि वो रुपया कहाँ से आएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगा दीपक जी। लेडीज एंड जी जेंटलमैन, सर। my greetings to all of you, both who are there from India, who are there from all parts of the world, where we have the presence of ICSI. And it makes me so proud to be a part of this August family. We all know that micro, small, and medium enterprises are the key to the economies in various countries. Very often, MSMEs are called the engine of growth for the emerging economies from the perspective of employment and innovation. As per the UN estimates, MSMEs constitute almost 90% of the global businesses and account for 60 to 70% of the global employment. Research studies in recent years have helped gather more data on what we call the engines of growth. There is an acceptance among policymakers that it is these enterprises which are critical for economic development in any country, and India is no different. India, when we characterize it as a developing market economy, and if we just look back, in the 21st century, India has been considered as the fastest growing major economy in the world. In terms of ease of doing business, we have been constantly plummeting our position from 142 in 2014 to 63 in the present times. And this is out of 190 countries in the world. And the World Investment Report 2020 by UNCTAD also describes India as the 9th largest recipient of FDI. And I also take this opportunity to share with you some very interesting facts about the Indian MSME sector. 63.38 million enterprises as per the 73rd round of NSS survey on unincorporated non-agricultural enterprises in manufacturing, trade, and other services sector. But only 6% are registered, which means 94% are unregistered. 95% fall in the micro category before the definition got revised, 4.8% in the small, and only 0.2% as medium. But another very interesting fact in terms of the Indian MSME sector is 52% of the MSMEs are in the rural areas, 71% are in the services sector, and 95% were organized as proprietorships. As the nation's largest employer, generating more than 111 million jobs through 63.38 million enterprises, contributing over 28% of the nation's GDP and more than 40% of the country's overall exports, the relevance and role of the MSME sector as the central driving force behind India's assertive vision to a dominant global economic power cannot be ever overemphasized. We can safely say that micro, small, and medium enterprises, they represent a significant part of the Indian economy and are one of the strongest drivers of the economic development, innovation, and employment. Creating opportunities for the MSMEs is in emerging markets is a key way to advance economic development and reduce poverty. With a sustained growth rate in the past few years, the MSME sector has come to represent the ability of the Indian entrepreneur to innovate and create solutions despite the challenges they are facing. If we look at the life stages of an enterprise and how they are getting funded, I would just like to share with you there are four stages which are normally being considered. The startup stage, where an enterprise uses funds from personal savings, savings of friends and family, primarily for the purposes of working capital. They also use public sector banks for working capital and collateral financing. Then we come to the survival stage of an enterprise, where we look to break even with regard to the investments made and would therefore seek to meet their specific requirements through both informal and formal sources.
Then we reach the growth stage, where they use public banks for working capital and collateral financing, and they use private banks for short-term loans. The move towards private banks is possibly due to greater financial need and an increase in their ability at this stage to afford higher cost of finance. And then we reach the sustenance stage, where an enterprise use personal funds, cooperative banks funds, public banks, and money borrowed from friends, again primarily for working capital. So if you see, largely there are two types of funding sources. Before Deepak ji shares with us what more options are there. The non-institutionals, which include loans from local money lenders, friends, relatives who charge a relatively higher rate of interest, and the institutional lenders. And the institutional lenders which are being regulated by Reserve Bank of India, and also nowadays where Security and Exchange Board of India regulates the institutions engaged in providing or mediating capital to MSMEs. But the MSMEs depend on both the sources, the institutional and the non-institutional, as per their needs from time to time. As part of the fourth census of MSMEs, only 5.18% of the units, both registered and unregistered, have availed of finance through institutional sources. 2.05% from non-institutional sources, and the majority, almost 93%, had no finance or depended on self-finance. If you look at the challenges which are there as to why is it that they are facing the constraints for the finance, there are quite a host of them. I'll just mention a few to you. The Indian banking system is still small relating to the increasing debt demand in the sector. From the bank's perspective, the MSMEs are considered to be high-risk borrowers. If I look at the fear of sickness being considered as one, as per the provisional data of 2016, which I could lay my hands upon, the outstanding credit with sick micro and small enterprises is 327 billion. And MSMEs normally are being considered as opaque rather than large firms because they have less publicly available information. The challenge of information asymmetry in this sector results in inadequate bank finance. Also, there's a huge dependency on cash transactions. The reported data is different from actual figures of sales and profitability. Largely, the GST is trying to address this challenge, and I'm sure in due course of time, this will be done. NPAs is another factor in this segment which creates fear among the bankers in providing loans. If I may just share the figures of NPA from June 18 to June 19, there's a 12%, the year-on-year growth is 12% in the MSMEs as compared to 10.8% in the large enterprises. The Government of India has been making new policies from time to time for support in this sector, and particularly for the smooth flow of credit to the sector. Amongst others, there is an outlined policy whereby banks are the predominant source of finance in India, and the Reserve Bank of India includes micro and small enterprises in the list of priority sector lending. But there's a dire need for alternative sources of finance. Though the Bombay Stock Exchange has launched the SME platform, in which the listing of SMEs is paving the way for new sources of finance, the role of risk capital, angel funding are some of these things which are definitely there. The recent initiative of the government, where a creation of a scheme named Fund of Funds with a corpus of 10,000 crores is also expected to help. But all these put in perspective is where I would like a funding guru who's there with us today, that we seek your guidance, Mr. Deepak Gaur, on the funding options which the MSMEs have, the existing as well as the budding enterprises. So we eagerly are all ears for you as to what you would be sharing us, which would be a game changer for the MSMEs in our country. And I'm sure we all would be immensely benefited with your advice today.
With these words, sir, I invite Mr. Deepak Gaur to share, unmute himself and share the funding options which are there. Thank you so much, Mr. Deepak. Thank you so much, Dr. Gulshan Sharma, uh, for having me here, and Mr. Nath for having me here. And you perfectly set the stage for me. And thank you so much. And now I'm going to share my screen today. So my screen is there only. We can see your screen. Okay, great. Ha. So welcome everyone. Today I'm going to share the maximum options for the MSMEs, right? So how you can get maximum benefit about this session? Just make lots of notes, right? And don't think that this is the another session on the row, and you just watch this session and just let it go. So because I did many preparation for this. So something about me, a little bit about me. This is I'm mentor of change with the Atal Innovation Mission and Niti Aayog, and soon I'm going to join government of UP for the growth their GDP 0.25 trillion to 1 trillion. And I have more than 16 years of experience, and I associated with the 5,000 fund providers. और मुझे एक सौभाग्य प्राप्त है कि मैं ऑलरेडी 2000 करोड़ का फंड अरेंज कर चुका हूं, जुटा चुका हूं लोगों के लिए, जिसमें बैंक के थ्रू, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, प्राइवेट लेंडर्स के थ्रू, फिनटेक्स और इक्विटी फंडिंग, राइट? सो this is the Atmanirbhar Bharat. Modi ji set the stage that we have 5 pillars for the Atmanirbhar Bharat, and financial sector is one of the key sector for this. And in Atmanirbhar Bharat, the package of 20 lakh crore is already given to the MSME sector and some other sectors as well, and focus on the land, labor, liquidity and laws to labor middle class, cottage industry, MSMEs and industry, among others. So there are main 5 bold reforms in which financial system should be perfectly fine, should be good, should be strong, right? And when I met with Mr. Anurag Thakur, so he is the Minister of State for Finance and Corporate Affairs in India, I discussed and shared some ease of doing business on right for the health sector. So again, I met with Mr. Shivraj Singh Chauhan, and I discussed with the how we can grow MSMEs in MP. In MPs, different districts in like Indore, Bhopal, Ujjain, Dhar, Devas. So there are many districts in MP. So here I am giving the speech in Bangladesh. So I met with Dr. Atiur Rahman. So he is the governor Bangladesh Bank in Dhaka. So we have very good discussion over the MSME growth. Here I am launching and the one of my venture, and signed the MOU with the one association, IAMSME of India, and with Mr. Rajiv Chawla, and Mr. Suresh and Patel was there, and he is now advisory board member for banking and financial frauds of the Central Vigilance Commission. So this is so he is Dr. Chhatrapati Shivaji, former IAS CMD and CEO. Dr. Chhatrapati Shivaji, IAS, former CMD and CEO SIDBI. So with this, I'm going to share importance of MSME. So importance. So MSME sector is the important sector for the national economy.
because almost 99% of Indian economy or Indian industry depend on this MSME sector, because जब से ये हमारी MSME की डेफिनेशन चेंज हुई है, मींस डेफिनेशन जब उसको 250 CR कर दिया है मीडियम को, तो उसके बाद से ऑलमोस्ट 99% बिजनेस in India now in MSME category. So largest employment generating sector after agriculture, and employment potential at low capital cost, constitutes almost 95% of industrial units and contributes 40% of manufacturing outputs and 33% of total exports. So this is a definition of the MSME. Like, you know, if you have a micro units and you invested 1 crore rupees and your turnover is 5 crores, then your enterprises fall in the micro category. And if you invested 10 crore rupees and your turnover is 50 crore rupees, then your enterprise fall in the small category. And if investment in your enterprise is 50 crore rupees and turnover is 250 crore, then it falls in the medium category. So majorly there are two type of funding options. One is debt funding options and another is equity funding option. So in debt funding options there are almost two type of loans, right? So I'm just setting the stage so we all are on the same page. So one is fund based loans. So what comes under fund based loans? Term loans, short term loans to purchase. So short term loans to purchase or create income proper assets. And another is, so in this fund based loan, in term loans, there are three types of EMI you can give to the bank. One is you can give monthly, quarterly or half yearly. Means government of India बहुत ease देती है कि इसमें आप monthly भी अपने EMI पे कर सकते हो, quarterly भी और half yearly भी. Next is project financing. In project financing, long term loans to create or acquire large size assets. For example, infrastructure and real estate projects, large scale plants and machinery. इसमें क्या होता है प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, आपका जो लोन है उसका टेन्योर इंक्रीज हो जाता है और यू कैन गो टू द ऑलमोस्ट 15 years. So another is working capital loans. So there are many type of working capital loans. One is CC, cash credit. So it secured against inventory and receivables and overdraft facility. And another is bill purchase and bill discounting and pre-shipment and post-shipment finance. Another fund-based loans are MSME collateral-free loans, government schemes, construction equipment loan, commercial vehicle loans, and unsecured loans. Like if you have very good balance sheet and credit score, so you no need to share your collateral with the banks, and you can get the unsecured loans. Another is loan against property. So you can, if you have the property, then you can give this property to the bank and you can get the loans. And another is less loan against securities. Like if you have FD, mutual funds, stocks, bonds, or insurance policies, then you can take the loan against your securities. Another good option is lease rental discounting, right? If you have any fixed income, so you can get the loan with from in the terms of LRD. Another is gold loan. So this is simple. Non-fund based loans. There are two type of majorly non-fund based loans. One is letter of credit and another is bank guarantee. So majorly in India, almost 134 scheduled banks. In this, almost 12 public sector banks and 22 private sector banks, 10 small finance bank, 1 payments bank, India Post Bank, and another almost 43 regional rural banks and 46 foreign banks in India.
So I'm starting with the PMEGP, Pradhan Mantri Employment Generation Program. So what happened in this scheme? You can get the loan up to 25 lakh rupees, right? So in this 25 lakh rupees for manufacturing units and 10 lakh rupees for service units. And who can apply for this scheme? Individual entrepreneurs, institutions, cooperative societies, and self-help groups and trust. They can apply for this loan, and you can apply this loan over the kvic.org.in and kviconline.gov.in /PMEGP portal. So this is a very good loan for creating the micro units, maximum micro units in India. So what happened in this scheme? If you are fall in the general category, you can get 15% of subsidy. And if you are fall in the general category and you belongs to a rural, आप गांव से belong करते हो, तो आप इसमें 25% की subsidy ले सकते हो. And if you are fall in the special category like SC, ST, OBC, minorities, women, ex-servicemen, physically handicapped, NER, hill and border areas, then you can get 25% subsidy. And if you fall in the rural areas, then you can get 35% of subsidy. So this is the data, as Mr. Nath said earlier in previous videos, that प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की जरूरत नहीं होती है. So प्रत्यक्ष यहाँ पे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, राइट, कि 2019-20 में ऑलमोस्ट 4,45,358 एप्लीकेशन रिसीव्ड हुए हैं, जिसमें से जो बैंक को फॉरवर्ड किए गए, राइट, वो 2,99,651 है जो बैंक को फॉरवर्ड कर दिए, और जो सैंक्शन हो चुके हैं वो 65,182 हैं. सो मैं ये डेटा आपको 19-20 का बता रहा हूँ. और मार्जिन मनी जो क्लेम्ड हो चुकी है 2019-20 में, वो है 64,238, और मार्जिन मनी जो रिलीज हुई है वो है 65,584. सो दिस इज अ वेरी गुड स्कीम from the PME, from the government of India, PMEGP, Prime Minister Employment Generation Program. Another wonderful scheme is Mudra, Micro Units Development and Refinance Agency. So PMMY, Pradhan Mantri Mudra Yojana, it launched by Honorable Prime Minister on April 18, 2015, and with the vision of to be an integrated financial and support services provider per excellence benchmarked with global best practices and standards for the bottom of the pyramid universe for their comprehensive economic and social development. And another mission is to create an inclusive, sustainable and value-based entrepreneurial culture in collaboration with our partner institutions in achieving economic success and financial securities. So ये है कि जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जो ग्राउंड पे वर्क करते हैं, ये स्कीम उनके लिए लॉन्च की गई है, और इसमें अप टू 15 लाख तक का लोन ले सकते हैं, राइट. और इसमें मेजरली देयर आर 3 कैटेगरीज जो मुद्रा की ऑफरिंग है. वन इज शिशु, अनदर इज किशोर, एंड थर्ड वन इज तरुण. इन शिशु you can take the loan up to 50,000 rupees for working capital, for marketing, and for your manufacturing unit. And in Kishore, you can take the loan up to from 50,000 to 5 lakh. And in Tarun, you can take loan 5 lakh to 10 lakh rupees. So Mudra loan is extended for a variety of purposes which result in income generation and employment creation. So गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेन फोकस ये भी है कि हम जो भी अपना यूनिट बना रहे हैं उसमें कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं, इस चीज पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए. और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इनिशिएटिव होते हैं एमएसएमईज को सपोर्ट करने के, उनमें ऑलमोस्ट ये विजन रहता है कि आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कीजिए, राइट. So business loan for vendors. So the loans for extended mainly for business loan for vendors, traders, shopkeepers,
and other service sector activities, working capital loan through Mudra cards, and equipment finance for micro units, transport vehicle loans for commercial use only, and loans for agri allied non-farm income generation activities, beekeeping, poultry farming, etc., and tractors, tillers, as well as two-wheelers used for commercial purposes only. And this is the data, कितना लोन अभी तक सैंक्शन हो चुका है और कितना अभी तक डिस्पर्स हो चुका है. सो मैं अभी आपको 2019-20 का फिगर बताऊंगा, बिकॉज इसमें 2021 का 13 नवंबर तक का ही फिगर है, राइट. And so इसमें figures is with you as well, and you can take it the figure from the here, right. So 622,465 and disburse is 3,29,684. So another wonderful scheme launched by MSME and GUI, Micro Small Medium Enterprises, and Government of India launched credit guarantee scheme to strengthen credit delivery system. So this is the one of the best scheme in the world for the Indian for the MSMEs, and it facilitates flows of credit on the MSME sector. Government of India and SIDBI set up the Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises to operationalize the scheme. So किस किस को ये CGTMSE की स्कीम है, किस किस को बेनिफिट्स का मिल सकता है? यदि आपकी माइक्रो एंटरप्राइजेस है और आपको 5 लाख तक का लोन चाहिए सर, तो आपको 85% ऑफ द अमाउंट डिफॉल्ट सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 4.25 लाख. इसमें आपको 4.5 लाख रुपए तक मींस 4.25 लाख, सॉरी नॉट 4.5 लाख, 4.25 लाख तक आपको इसमें मिल सकता है, राइट. यदि आप इसमें 5 लाख टू 50 लाख के लिए अप्लाई करते हैं तो 75% ऑफ लोन अमाउंट यू कैन गेट, एंड अबव 50 lakh to 200 lakh, almost 75 lakh of amount, 75% of amount you can get. So there are n number of schemes with the SIDBI, and SIDBI, under SIDBI you can get the loan up to 2 crores, right. SIDBI set up on 2nd April 1990 under an act of Indian Parliament, act as the principal financial institution for promotion, financial and development of the MSME sector, as well as for coordination of function to institutions engaged in similar activities. So there are the main 6 SIDBI schemes I'm mentioning here. There are अभी और भी इनकी बहुत सारे स्कीम्स हैं, बट ये जो बहुत पावरफुल स्कीम्स हैं जो बहुत हेल्प कर रहे हैं अभी MSMEs को. सो वन इज स्माइल, SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर माइक्रो स्मॉल and medium enterprises. In this scheme, you can get 10 lakh to 25 lakh rupees. And there is a SAF, Smile Equipment Finance. Another is loans under partnership with OEM up to 1 crore. You can get to 1 crore rupees in this scheme. And another is working capital cash credit. And number 5th is STFS, SIDBI Trade Finance Schemes. In this scheme, you can get 10 lakh to 1 crore rupees. And another is speed, SIDBI loans for purchase of equipment for enterprises development. So if you are going to apply as a new, then you can get 1 crore rupees, and if you have existing account with the SIDBI or bank, right, then you can get 2 crore rupees. And this tenure is 2 to 5 years, and the rate of interest almost all the schemes is falls under 9.25% to 10%. Now this is the very innovative option, another option for the MSME funding, fintech. So you can
take the fintech, you can take the loans from the fintechs, and this is the innovative way with the today's world, right? So in fintech, what you can do, you no need to go to the bank, and from your office or from your home you can apply for this for the MSME funding. और इसमें बहुत ज्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा, विद इन 3 days you can get the loan, and they have very innovative and very powerful algorithm with them, and they can approve your loan over the over online only. You don't need to go anywhere. सो इस सेक्टर में जो बहुत अच्छे फिनटेक वर्क कर रहे हैं, जिसमें मैंने आपको सामने शेयर किया हुआ है, वन इज कैपिटल फ्लोट, लैंडिंग कार्ड, जिप लोन, ऑफ बिजनेस, इंडीफाई, नियो ग्रोथ, विस्तार एंड रेजर पे. So these are very innovative fintechs you can use in these fintechs. You no need to go on the long process of the getting funds, right? Because होता क्या है कि टाइम इज वैल्यू एंड टाइम इज मनी. आप टाइम, बैंक के साथ क्या होता है, बैंक की अपनी एक लिमिटेशंस होते हैं, जिसमें आप उनके साथ जाओगे, वर्क करोगे, तो उसमें कई बार टाइम बहुत ज्यादा चला जाता है. सो विद फिनटेक यू कैन सेव योर लॉट्स ऑफ टाइम. So there is another trade receivable discounting system with the government of India, and they are promoting this a lot in their champions website and in their MSME website. So what happens in trades? So if you have bill, right, you have invoice, and suppose आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आ गए और आपको वो ऑर्डर फुलफिल करने के लिए ऑब्वियसली एक हैंडसम और एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चाहिए, और वो अमाउंट अभी नहीं आपके पास में है. सो डू वन थिंग, यू कैन टेक द इनवॉइस फ्रॉम योर vendor, right, from your service provider, and you can upload your bills, your invoices in these 5 website, in one of the 5 websites, right? And what happened, they send this invoice, your invoice, to the corporate, right, your service corporate, and they approve that invoice, and then invoice go to the bank. और फिर बैंक क्या होगा, इसमें बैंक लगभग आपको ये 3-4 बैंक में आपकी फाइल जाएगी, और 3-4 बैंक के आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे, उनके इंटरेस्ट मिल जाएगा कि हाँ, हम आपको ये फंड देना चाहते हैं अगेंस्ट दिस इनवॉइस. और फिर वहां पे बेस्ट पार्ट इज दिस कि आप खुद चूज करोगे आपको किस बैंक के साथ जाना है. सो दिस इज वेरी orders. Now you no need to worry for the working capital, because if you have invoices, and you can get the fund from the trades. So there are 5 websites I am mentioning here, and there are a few more websites as well. So another schemes launched by निर्मला सीतारमन जी, अभी बहुत 12 नवंबर को बहुत अच्छी स्कीम उन्होंने लॉन्च की है. सो अप टू 100 करोड़ कोलेट्रल फ्री लोन आपको मिल जाएगा. सो दिस इज वेरी पावरफुल स्कीम, राइट? सो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? 20% ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 Feb 2020, और आपका अकाउंट SMA 0 होना चाहिए. अप टू 30 days पास ड्यू ऑन 29 Feb 2020, और आपका outstanding loan should be 50 to 500 crores only, right? It means if you have outstanding of 500 crore rupees, and then you can get 100 crores rupees collateral free loan, and no limit of turnover, and no collateral security required for this scheme. And almost 27 sectors हैं जिस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम अप्लाई की है, लागू की है. सॉरी. सो कौन कौन से सेक्टर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दी है. वन इज पावर, कंस्ट्रक्शन, आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, रोड्स, रियल एस्टेट, ट्रेडिंग, केमिकल्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, FMCG, नॉन फेरस मेटल्स, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो कंपोनेंट्स, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म,
plastic products manufacturing, automobile manufacturing, auto dealership, port and port services, shipping, building materials, corporate retail outlets, health sector, textiles, cement, mining, sugar, aviation. Almost all sectors are covered in this scheme. So how can you get debt funding या लोन वेरी फास्ट? सो इसमें बहुत जरूरी है कि आप जब भी लोन अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप अपना सिबिल स्कोर चेक करें, और उसके सिबिल स्कोर में यदि कुछ आपका स्कोर कम है या कुछ इश्यूज है तो वो आप बैंक के साथ उसको करेक्ट कर सकते हो. तो बेटर है कि आप 3-4 महीने पहले अपना सिबिल स्कोर चेक करें और उस पर वर्क करना स्टार्ट करें. और आपके फाइनेंशियल सारे हेल्दी होने चाहिए. वो एक बहुत बड़ा है कि हमें बहुत बड़ा इशू रहता है कई बार एमएसएमई ओनर्स के साथ में कि उन्हें मालूम नहीं होता है कि हमारे फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कहाँ से हैं, और ये बहुत ही फंडामेंटल इशू रहता है. अनदर इज करेक्ट बिहेवियर, बिकॉज अभी आई शेयर्ड अबाउट फिनटेक. फिनटेक में क्या होता है, उनका एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि जो अभी बैंक्स उसको मिस कर रहे थे, फिनटेक उस पे ही उसको सबसे ऊपर लेके चल रहा है. वो क्या है कि योर बिहेवियर शुड बी करेक्ट. वो क्या होता है, साइकोसोमेटिक टेस्ट चेक करते हैं, सोशल ट्रेसिंग वो लोग करते हैं. आपका फेसबुक पे भी जाएंगे, लिंक्डइन पे भी जाएंगे, आपका ट्विटर अकाउंट्स को वो चेक करेंगे, आपका बिहेवियर चेक करेंगे, साइकोसोमेटिक चेक करेंगे, उसके बाद आपका लोन अप्रूव करते हैं. और यदि ये तीनों आपके परफेक्ट है, अप टू द मार्क है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और लोन अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा. ऑटोमेटिक होगा ये, इसमें कोई मैनुअल नहीं है कि कई बार सामने बैठ के वो चीजें नहीं हो पाती जो कि आप विद द एल्गोरिथम कर सकते हैं, राइट. एंड योर फाइनेंशियल बिहेवियर शुड बी वेरी वेरी अप टू द मार्क एंड इनोवेटिव एंड परफेक्ट. बैलेंस शीट, profit and loss, fund flow statement, and ITR. And here I am requesting all of you, just give only 15 minutes daily to read about your financials. यूजुअली आउटसोर्स कर देते हैं एमएसएमई ओनर्स अपना फाइनेंशियल्स को. उन्हें मालूम नहीं होता है कि कहाँ से आप कर सकते हो उसको आउटसोर्स, बट कई बार उन्हें अपने फिगर्स नहीं मालूम होते कि कहाँ से ये फिगर आया है. और जब आप बैंकर के सामने जाते हैं या कोई स्कीम लेने जाते हैं तो वहां पे वो एक डाउट क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको इन्वेस्टमेंट, आपको फंडिंग, आपको लोन मिलने में काफी दिक्कतें आ सकती हैं. सो अनदर ऑप्शन इज इक्विटी फंडिंग, राइट. सो आई शेयर्ड a debt funding and now this is second option, equity funding. So in equity funding what you can do, so you can go with the SME IPO. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा एक रिलैक्सेशन दिया है एसएमईज को कि आप एसएमईज को क्यों नहीं मेन बोर्ड पे लेके आते हो, क्यों नहीं आप इनको आईपीओ में लेके आते हो. सो उसके बाद बीएसई और एनएसई ने साथ में मीटिंग किया, बोर्ड ने मीटिंग किया, और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्लान लेके आए कि यस अब एसएमई भी आईपीओ अपना लेके आ सकते हैं. अभी मेन बोर्ड में आने के लिए लगभग 3 इयर्स का प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, 15 करोड़ का प्रॉफिट एनुअली चाहिए, और कॉस्ट टू आईपीओ ऑलमोस्ट उसमें 15 से 20 करोड़ का कॉस्ट उनका लग जाता है. बट यही यदि आप एसएमई है तो आपका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में कॉस्ट आ जाता है, राइट. वो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है आज के टाइम में, और आप इजीली अपने एंटरप्राइज को आईपीओ में लेके जा सकते हो और वहां पे फंड कलेक्ट कर सकते हो. और जैसे ही आप फंड के लिए जाते हो तो वहां पे अभी जैसे ही आप डेट फंडिंग लेते हो तो डेट फंडिंग में आपके जो शेयर है, जो आपके इक्विटी शेयर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट. और जैसे ही आप आईपीओ के लिए जाओगे तो आपके शेयर की एक वैल्यू होती है. सो मिनिमम 3 करोड़ इश्यूड कैपिटल इसमें होनी चाहिए. और अभी तक जो लिस्टेड है 330 कंपनीज लिस्टेड है in last 7 years on the IPO, for the IPO, and almost 3,200 crores का वो रेज कर चुके हैं. टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उनका है जो 18,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है. सो दिस इज अ वेरी गुड फिगर एंड गुड न्यूज फॉर द एमएसएमई ओनर्स. एंड 20%
focus on this point, almost 20%, 66 companies went to main board, right? It means आपका जो cost to IPO था, यदि आप मेन बोर्ड में स्टार्टिंग में जाओगे तो आपको 15 से 20 करोड़ रुपए लगेगा, राइट? और यहाँ पे हमने क्या किया, आपने 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में इन्वेस्ट किया और फिर आप उसमें से स्लिप कर गए मेन बोर्ड में, सो आपका ये कॉस्ट एक बच गया और एक आपका ना फाइनेंशियल डिसिप्लिन बन जाता है, राइट? जब आप आईपीओ के लिए जाते हो तो आप क्वार्टरली अपने फाइनेंशियल शेयर करते हो आप, और इसमें क्या होता है कि एसएमई जो मेन बोर्ड कंपनीज होती हैं, मेन बोर्ड कंपनीज को अपना एजीएम्स करना होता है रेगुलरली, उनके कंप्लायंसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट कंपैरेटिवली एसएमईज के लिए उतने कंप्लायंसेस नहीं है. So SME can give quarterly result in 6 months instead 3 months by email instead by papers. एक कॉस्ट इसमें क्या बच जाता है कि उनको न्यूज़पेपर में ऐड भी देना होता है, मेन बोर्ड कंपनीज होती हैं. एसएमई सेक्टर्स में आपको न्यूज़पेपर में ऐड देने की जरूरत नहीं, आप सिंपल ईमेल से अपने रिजल्ट शेयर कर सकते हो और क्वार्टरली शेयर करने की जरूरत नहीं, आप 6 मंथ में भी शेयर कर सकते हो. सो दिस अ वेरी बिग रिलैक्सेशन फॉर आवर एसएमईज. And 60 plus SMEs in the pipeline to list prospectus already given to the BSE and NSE. So, sorry. So here is the statistics for SME IPO by 19 November 2020. Almost 330 companies are listed on SME till date, and market capitalization जिनका है 20,326 crores, and total money raised till date 3,381, and number of companies migrated to main board which is 90, and number of companies listed as of date 240, and number of companies suspended due to some paperwork 22, and number of companies eligible for trading 217. So this is the data in front of you. You can check it with the SME IPO and BSE website. I took it from the BSE website. So this is very innovative, and you can think about this. And merchant banker का भी इसमें उतना expenses नहीं है, क्योंकि BSE IPO BSE SME IPO ने क्या किया है, अपनी वेबसाइट पे कुछ मर्चेंट बैंकर्स के नेम लिस्ट किए हुए हैं. आप उनसे डिफरेंट मर्चेंट बैंकर से जाके डिस्कस कर सकते हो, और जिसका अमाउंट आपको कम लगता है और जिसके साथ आपका डिस्कशन होता है तो आप उनको फाइनलाइज कर सकते हैं और उनके साथ जाके आप एसएमई आईपीओ का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं. दिस इज वेरी इनोवेटिव वे और वेरी इजी वे टू रेज द फंड्स, एंड आपके शेयर की भी एक वैल्यू बढ़ती है. सो अनदर इज, जब हम माइक्रो के लिए सोचते हैं कि हम माइक्रो यूनिट स्टार्ट करें या स्मॉल यूनिट स्टार्ट करें, सो व्हाई डोंट वी थिंक फॉर द स्टार्टअप. यदि हम स्टार्टअप के लिए सोचते हैं तो उसमें हमारे पास प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आ जाते हैं, गवर्नमेंट की रिलैक्सेशंस आ जाती हैं. नंबर 1, इसमें एंजल इन्वेस्टर्स, वी हैव लिमिटेड बैंक्स और उन बैंक के प्रोडक्ट्स हैं, राइट, और लिमिटेड स्कीम्स हैं. बट in a startup, if you are going to launch your startup, so first of all you can raise the fund as Mr. Nath said rightly कि आप अपना own fund उसमें ले सकते हो, family and friends से आप ले सकते हो, right? But same goes with the angel investor. आप angel investor से भी fund ले सकते हो, जो almost, मैं इसकी बात करूं तो in India only 6,000 angel investors हैं, जिनके पास जो आपके सेक्टर में इंटरेस्टेड है और आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं. बस हमें क्या है कि राइट अप्रोच की जरूरत है, राइट डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, देन वी कैन रेज द फंड. एंड देन जैसे ही कंपनी बड़ी होती है, राइट, मींस एक नेक्स्ट स्टेज में आती है जब हमारा एमवीपी मींस मिनिमम वायबल प्रोडक्ट हम क्रिएट कर लेते हैं, तो उसके बाद वी विल गो टू द नेक्स्ट स्टेज. और वहां पे फिर हमारे पास एंजल इन्वेस्टर के बाद में वीसी और पीई फर्म्स आ जाते हैं. देन कॉर्पोरेट आर्म्स लाइक अमेजोन का अपना एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, राइट, एयरटेल का अपना एक इन्वेस्टमेंट हाउस है, रिलायंस का अपना एक इन्वेस्टमेंट हाउस है. ऑलमोस्ट 60-70 कॉर्पोरेट कंपनीज हैं, उनके अपने कॉर्पोरेट आर्म्स हैं जो प्राइवेट इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं. एंड अनदर
good concept is coming into the world nowadays is family offices. So I will discuss about family offices soon. So this is about family offices. So very good, figures. So this is the equity funding option, family offices, right? The total estimated assets under management of family offices stands 5.9 trillion, while the wealth of the families behind them totals a vast 9.4 trillion. So this is a huge amount, huge number, and it's a huge opportunity for the MSME sector. So if you go to launch as a startup, और यदि इसमें एक better point ये भी है, यदि आप already MSME sector में है तो आप अपना किसी एक product का भी startup launch कर सकते हैं, आप वहां वैसे भी fund raise कर सकते हैं. And estimated that between 6,500 family offices exist globally. Almost 7,300 का एक figure है कि जो अभी globally family offices operate कर रहे हैं. And India has about 1,50,000 high net worth individuals, high net worth families with the cumulative net worth of 2 trillion, right? और ये net worth अभी 2025 तक 5 trillion हो जाएगी. So यहाँ पे हमारे पास क्या ऑप्शंस बहुत हैं इक्विटी फंड रेज करने का. So this is the chart जिसमें मैं 2016 2017 मींस 2010 टू 2017 का एक फिगर आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे इंडिया ग्रो कर रहा है हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स में, राइट, हाई नेटवर्क फैमिली ऑफिसेस में एज वेल. सो इन 2010 देयर आर 153,000 high net worth individual, and to 2017 there are 263 high net worth individuals. So why MSME don't get the funds? So number one is inability to prove. Second is credit worthiness. Due to the lack of audited financial statements, details, bank of accounts, and low or no CIBIL score, a major portion of the MSME sector is deprived of formal sector financing. Number third is tedious and long drawn processes, lack of tailor-made products. So again, why 90% MSME don't get the funds? So उसके लिए आपको क्या करना है? I'm giving here the solution, right? So how you can get the funds? Suppose you are going to prepare your investment deck, or you can say project report, and your financial modeling. So you have to focus on these things I am going to share. One is introduction. If you are going to take the loan or investment from the investor, right, so you have to give your introduction slide very crisp and subtle, and these fundamentals play a big role, right? Short, powerful, enticing. What do you do in one word, and what you do for the target consumer, and why the target consumer would be interested in your product or services. It must be mentioned clearly in one lines only. And the problem slide, in problem slide, what you can do, what problem does your business solve, and why is this problem relevant to your targeted investors, and consider using a story or a real life scenario to add extra weight and credence to your problems. And then is the team. Tell about your team, their benchmark, their achievements, their qualification, and the solution. What solution you are going to give to your audience, your target audience, or your potential customer. कैसे वो different है और आपके competitor से. The market, how big your market is, कितना % का रिटर्न आप लेके आ सकते हो, बिकॉज जितना बड़ा मार्केट होगा उतना बड़ा आप रिटर्न लेके आओगे, उतना बड़ा आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल कर सकते हो. एंड द कंपटीशन,
सो कौन कौन लोग इसमें हैं, क्या क्या यूएसपीज आपकी हैं जिन पे आप बैट कर सकते हो और जिस पे आप इस स्टार्टअप को या इस एमएसएमई एंटरप्राइज एमएसएमई को आप ऊपर लेके जा सकते हो. एंड व्हाट इज योर बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान इज a very essential and important slide or important slide for your इन्वेस्टमेंट डेक और प्रोजेक्ट प्लान, बिकॉज यही है कि आप कैसे एक अपना प्रोडक्ट सेल करोगे और फंड लेके आओगे, राइट? तो उसमें आपको कौन सा बिजनेस प्लान आप उसमें यूज कर रहे हो, देन रेवेन्यू मॉडल क्या है, उसके क्या क्या रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं, राइट, विच यू आर गोइंग टू गिव, एंड जिसकी वजह से आप एक अमाउंट लेके आओगे, एक पेमेंट लेके आओगे, फंड आपके रिटर्न्स आएंगे, और जिस रिटर्न्स को आप इन्वेस्टर्स को दोगे या बैंक से आपने लोन लिया तो इंटरेस्ट में दोगे, और या फिर आपके लिए होगा. देन फाइनेंशियल ओवरव्यू. एंड सी फाइनेंशियल ओवरव्यू में क्या होता है कि मैंने बहुत सारे एमएसएमई से मिला हूँ, स्टार्टअप ओनर से मिला हूँ, वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, सोल्यूशन एक अच्छा बना देते हैं, बट फाइनेंशियली उनकी मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत पुअर होती है. सो जरूरी है फाइनेंशियल्स पे ध्यान देना. एंड द आस्क, उनका आस्क क्लियर नहीं होता है कि उन्हें ये नहीं मालूम, कई बार होता है कुछ मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट कुछ स्टार्टअप्स ओनर्स को या कुछ एमएसएमई ओनर्स को कि उनको कितना फंड चाहिए, कहाँ उसका यूटिलाइजेशन होगा, कितना मार्जिन वो क्रिएट कर सकते हैं, कितना उसमें प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, क्या उसमें रिटर्न दे सकते हैं. ये फंडामेंटल चीजें हैं, मैं यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं बता रहा हूँ, राइट? ये सारे फंडामेंटल्स हैं. इस पे यदि हम फोकस करेंगे तो हमें मतलब एक मतलब हमारा हम बहुत स्मूथ अपने वेंचर को रन कर सकते हैं. और वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर हियर, दैट in almost all companies there are HR department, there are admin department, there are sales and marketing department. So I'm suggesting here that in each and every MSME और स्टार्टअप एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट भी होना चाहिए, जिसका हमेशा काम यही रहेगा कि इन्वेस्टमेंट कैसे आएंगी, कहाँ से आएंगी, कैसे हम अपने इन्वेस्टर्स का ख्याल रख सकते हैं, कैसे अपने इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट को सेफ रख सकते हैं, कैसे उनके साथ एक रिलेशंस अच्छे बना सकते हैं, वो बहुत जरूरी है. कैसे हम अपने बैंकर के साथ रिलेशन बना के रख सकते हैं, वो मैं चाहता हूं कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, एमएसएमईज हैं या स्टार्टअप्स हैं, सबको ये सोचना चाहिए और अपने कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट जरूर बना के रखना चाहिए. और उसमें एक आप समरी ऐड करो, टाइमलाइन ऐड करो कि यस इन 1 ईयर हम यहाँ पहुंच जाएंगे, इन 2 इयर्स हम यहाँ पहुंच जाएंगे, 5 इयर्स यहाँ पे, 10 इयर्स यहाँ पे. एक 10 इयर्स का रोड मैप क्लियर कट उसमें होना बहुत जरूरी है, जो आपके इन्वेस्टर्स को या आपके लेंडर्स को इम्प्रेस करेगा और आपको फंड रेज करने में हेल्प भी करेगा. So with this I am going to share that these are the resources and जो मैंने इस स्लाइड में शेयर किए हैं, you can get the list from here and you can go in these websites. So with this, thank you so much, thank you for your patience, thank you for listening me. So if you want to connect, you can connect with me over the YouTube. और आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया मतलब नहीं रहेगा, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, उसके लिए आप ICSI पे जा सकते हो, वहां पे भी शेयर कर सकते हो आप, राइट? और YouTube का जो चैट बॉक्स है, आप उसमें भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको अपने क्वेश्चन कर सकते हो. और यहाँ मैंने शेयर किया है, आप गूगल फॉर्म में भी मेरे को आपके क्वेश्चन दे सकते हो. ये https:/forms.gle आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन लिख के दीजिए. आई एम श्योर आपका हर एक क्वेश्चन आंसर्ड होगा, राइट? ड्यू टू द टाइम अभी यहाँ पे नहीं कर सकते, बट ये कि हाँ आप इसको आगे, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, और आपका क्वेश्चन कभी भी होता है तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हो, आप कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पे मेरे को दे सकते हैं और मैं इसका आपको आंसर कर दूंगा. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू दीपक जी, थैंक यू सो मच. अभी Thank you, तक अक्सर ये माना जाता है कि जहां
हम फंड्स की बात करें, जहां रिसोर्सेज की बात करें, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें, जी, तो एक बहुत बड़ा अंधेरा है, एक बहुत राइट, बड़ा चैलेंज है। और अगर मैं हाल ही में 2019 की एक रिपोर्ट आईएफसी इंटेल कैप की रेफर करूं, तो जी, उसमें कहा गया था कि द क्रेडिट गैप इज एट अ ह्यूमंगस लेवल ऑफ 16.66 लाख करोड़, यस, that is about यू राइट सर। 240 billion US dollars, whereas in 2012 it was just 200 billion dollars. यस सर, आप अपने नाम के अनुसार आपने सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, सभी एमएसएमईज के लिए एक बहुत ही बड़ा दीपक, और दीपक के अनुरूप एक उम्मीद का दीपक मैं कहूँ, आपने प्रज्वलित किया है। और मुझे यकीन है कि आपके इस सभी एक्सप्लेनेशन जो आपने दी या क्लैरिफिकेशन जो आपने दी, सभी को एक नई जागृति आएगी कि केवल बैंकों के द्वार ही जाने की आवश्यकता नहीं है। यस, आज भारत देश में और भारत सरकार के विभिन्न प्रयासों के माध्यम से हमारे पास अनेक अनेक और साधन हैं, अनेक अनेक और रास्ते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी जो विजन है, जो हम अपना बिजनेस में अचीव करना चाहते हैं, उसकी कई नई पगडंडियां जो अब बड़े बड़े हाईवेज के अनुरूप बन गई हैं, और राइट, चलने की आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे कि आपने डेट ऑप्शन बताई, जैसे कि आपने इक्विटी ऑप्शन बताई, जैसे कि आपने फैमिली ऑप्शन बताई, ऑफिसेस, यस, ऑफिसेज की आपने वो बात करी। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने आज सुना, या जो आपके यूट्यूब पे वीडियोस और आईसीएसआई के वेबसाइट पे इन वीडियोस को एक बार देखेंगे, वो बार बार देखेंगे। ऑलरेडी हमारे पास ये रिक्वेस्ट आने लगी है कि प्लीज ये जो प्रेजेंटेशन है ये हमारे साथ शेयर की जाए। तो मेरा जी, आपसे सबसे पहले ये अनुरोध होगा कि आप हमारी प्रेजेंटेशन को हमारे साथ शेयर करिएगा, ताकि हम इस प्रेजेंटेशन को अपने वेबसाइट पे डालें, ताकि अधिक से अधिक लोग उसको देखें। और मैं उनसे यही कहूँगा कि आपकी कोई भी समस्या हो तो हमारे पास हमारा गुरु भाई है मिस्टर दीपक गौड़, और उनकी सहायता से आप अपनी एटलीस्ट फाइनेंस की समस्या का निदान पा सकते हैं। आप इस मामले में बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपकी कोई भी फाइनेंस की समस्या हो, चाहे वो सरकारी स्कीमों की मदद से या जो ऑल्टरनेटिव फाइनेंसिंग के मॉडल्स हैं उनकी मदद से, आपकी समस्या समस्या नहीं रहेगी। आपको रादर दूसरी बातों के ऊपर चिंता करने का ज़रूरत पड़ेगी। वो टेक्नोलॉजी की बात हो, वो मार्केटिंग की बात हो, आप उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दीजिए। और जैसे कि कहा जाता है दीपक जी कि ऑलमोस्ट 94-95% ऑफ आर MSMEs are sole proprietorships. I'm राइट, sure the government's intervention, even with the respect of fund of funds, even with the emphasis which they're laying on equity as a source of funding, even with these new models of what you call the angel funding or the risk capital funding, all these are encouraging a corporate sort of setup in our country, so that हम वो जो एक कंबल ओढ़ रखा था कि मैं और मेरी कंपनी, उसको हम में मदद करें। क्योंकि प्रधानमंत्री जी भी अक्सर बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, यस सर, और उस सब में मैं एक प्राणी रह जाता हूं। और उस सब में जब तक हम जुड़ेंगे नहीं, कल हमारा एक प्रोग्राम था जिसके ऊपर डॉक्टर साहब ने जैसे वो बता रहे थे कि सोनी साहब को भी बुलाया था, जो फिल्म एंड मीडिया एंटरटेनमेंट के सेक्टर स्किल काउंसिल के हैं। तो उन्होंने बताया कि यस्टरडे वाज द टेलीविजन डे, सर, और जब बात कर रहे थे हम अपने टेलीविजन की, तो उसमें एक गाना बजता था पुराने दिनों में, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, और बड़ा ही मधुर था वो। यस सर, और अगर हम उसको आज के समय में भी उसको अगर हम अपनाएं और उसको उतारें, तो एक चिड़िया और अनेक चिड़िया का जब तक भावना नहीं होगी, ये हमारा जो समूह है वो खंडित ही रहेगा। वो कभी भारत एक विश्व गुरु बनने का जो हम आज पुनः एक सपना देखते हैं, उसको अचीव करना काफी मुश्किल होगा।
पर मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं दीपक जी कि आपने इतने कम समय में इतना जो ज्ञान आपने हासिल किया है. Don't mind my saying that you are probably half my age, and Yes, sir. the amount of experience which you carry and the amount of clarity which you have in terms of how things have got to be approached, how things have got to be tackled, and finance, which is always, people keep at an arm's length. आपने बताया कि कैसे वो उस विश्वास को पैदा करना चाहिए, क्योंकि विश्वास के बिना बैंक कहता है आप बाएं जाओ, और Yes. जिसको फंडिंग लेनी होती है वो कहता है कि मैं क्यों जाऊं इसके पास, इसने देना तो है नहीं. There is a big vacuum in terms of the trust which is there, the trust deficit which is there. But when we look at the entrepreneurial attitude, the entrepreneurial aptitude which is there, आज भी वही एप्टीट्यूड है जो कि अगर हम जो कहानियां सुनते थे कि भारत एक सोने की चिड़िया थी, केवल उसी ट्रस्ट को अगर हम वापस पुनः ले आएं और अपनी समस्याओं का समाधान आज के समय में जो भी हमारे पास सॉल्यूशंस है अवेलेबल हैं उसके माध्यम से उनको हम सॉल्व कर सकें, तो ना केवल भारत एक विश्व गुरु दोबारा बनेगा in terms of knowledge, but it will also be a business center for the entire world. And I'm sure in the lifetime of ours, we will be seeing these things, because there is one thing which we have. There are people like you who are young, who are enterprising, and who have clarity of vision. So thank you once again very much, because So thank you. So, yes, sir, please go ahead. India is being blessed. The advent of globalization offers both challenges and opportunities to the Indian MSMEs. People thought the pandemic is a big challenge, but then, as our Honorable Prime Minister says, it's an opportunity. It's an opportunity for our country. It's an opportunity for everyone over here. And I do not leave out MSMEs because they are so integral to the Indian economy that it's an opportunity even for them. And we have been so strong in our foundations that no pandemic can shake us. And when there are gurus like you, when there are brothers like you who can stand beside the MSMEs and even the budding entrepreneurs, I'm sure वो उद्यमिता का जो एक मॉडल जो हमारे देश में हमेशा से रहा है वो आगे और पनपेगा. और इसी के साथ मैं एक बार पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लीज शेयर योर पार्टिंग थॉट्स. So, sir, I was very much impressed with you, and you are my mentor. I learned many things from you. आपने एक बहुत लंबी पारी खेली है, और NSIC के साथ में आपने जो इंडिया को दिया है वो बहुत ही कमेंडेबल है, बिकॉज एक स्टेज पे थी NSIC जब आपने ज्वाइन किया था उसको, और आपने किस हाइट तक उसको पहुंचा दिया. सो आई एम श्योर मैंने उसको देखा है, मैंने NSIC को विजिट भी किया है. In your absence, you were not there that right, and so मैंने उसको विजिट किया, देखा कि किस तरीके से आपने देश विदेश में और कितने इंक्यूबेशन सेंटर्स ओपन किए हैं. और मैं अपना सपोर्ट जो भी मैं आप कर सकता हूँ ICSI के लिए और MSME सेक्टर के लिए, सो डेफिनेटली मैं करूँगा. और मैं सपोर्ट, अपना ब्लेसिंग्स, सपोर्ट और देना चाहूंगा डॉक्टर गुलशन शर्मा जी को भी, क्योंकि क्या स्टेमिना मैं उनके अंदर देख रहा हूँ कि मतलब मुझे कई बार लगता है कि हम अभी मतलब उतना कुछ कर ही नहीं रहे जितना कि वो इस यंग एज में कर रहे हैं. मैं उनको यंग ही बोलूंगा. राइट, यंगस्टर इतना नहीं कर सकते. और सर मैंने क्या बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशंस का मैं पार्ट रहा हूँ, कोर कमिटीज में या उनके कोर मेंबर रहा हूँ. कुछ मैं बोर्ड, उनके बोर्ड में भी रहा हूँ, एडवाइजरी बोर्ड्स में भी. बट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबल बिजनेस एसोसिएशन मेरे को ICSI में दिखा, वो मुझे अभी तक नहीं दिखा. क्योंकि एक कंसिस्टेंसी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वसुधैव कुटुंबकम को साथ में लेके चलना. और यहाँ पे मुझे याद आता है सचिन तेंदुलकर जी का एक कोट है, आई कैन वी कैन. यस. सो मतलब बहुत ही मेरे पास वर्ड नहीं है, बिकॉज मेरी डिक्शनरी बहुत छोटी है वर्ड्स की.
Right. So with these words, thank you so much. दीपक जी, आपकी जो डिक्शनरी जिसमें भरपूर है, I would say it is overflowing, is what you are a real guru and you are a financial wizard, and I'm sure the participants would be overwhelmed by your address, by the solutions which we have given them today. And लोग बाग शोले पिक्चर को बार बार देखते थे, उसी प्रकार से आज आपके दिए हुए इस वेबिनार में एड्रेस किया हुआ जो आपने हैं, लोग बाग उसको एटलीस्ट रिपीट मोड पे अनेकों बार देखेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपना प्रेजेंटेशन हमें शेयर करिएगा। श्योर सर, हम इसको अपने वेबसाइट के ऊपर जरूर डिस्प्ले करेंगे। आपका जो ये आज का ऑडियो होगा, वीडियो होगा, वी विल बी पुटिंग इट ऑन आवर वेबसाइट. We will be sharing with you so that it can be shared with as many people as possible. So thank you once again, and I would also like to thank Dr. Gulshan Sharma for providing us this opportunity, whereby we share the immense knowledge of Mr. Deepak Gaur with the participants across the fraternity, which is there in the education sector and which is there in the MSME sector. So thank you very much, sir. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच दीपक गौर जी। आपकी प्रेजेंटेशन बंद होगी तो मुझे रूबरू दर्शन होंगे रविंद्रनाथ जी के। Okay, so ladies and gentlemen, my deepest gratitude and thanks to Deepak Kumar Gaur ji, and of course under the dynamic, dedicated and full throttle support, you know, in the top gear by Ravindra Nath ji, things are moving in the right direction, and I think it's a very nice packaging where education, skills, competencies, empowerment, and at the same time, once we know कि बच्चे education तो ले लेंगे, skill तो ले लेंगे, उसके बाद उनको right hand holding चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए कि वो कैसे अपने काम को शुरू करेंगे। तो जब तक आप किसी चीज को मुकाम तक नहीं पहुंचाएंगे, उसको एक लास्ट स्टेज तक नहीं पहुंचाएंगे, तो वो हाफ हार्टेड बैटल रहेगी। लड़ाई का युद्ध तो तभी जीता जाता है जब आखिरी गोली तक सारी चीज को लेकर चले। सो इन ए पॉजिटिव वे, इन ए वेरी पॉजिटिव वे, मैं कंस्ट्रक्टिव वे में ये कहना चाहूंगा कि आपने एक यूपी की बातचीत की थी बीच में। मैं बिफोर कंक्लूडिंग आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड यूपी के बारे में आपने क्या कहा था कि हम यूपी में अभी करने जा रहे हैं समथिंग, आपने क्या बोला था वो? व्हाट एग्जैक्टली वाज दैट? यस, तो सर मैंने ये बोला था कि यूपी का बोला था। हाँ जी, यस यस। तो यूपी में क्या हो, उनका जो अभी यूपी का जीएसडीपी है, जो एसजीडीपी मतलब जो स्टेट का जीडीपी है, वो 0.25 ट्रिलियन है, और जिसको वो गवर्नमेंट चाहती है कि उसको 1 ट्रिलियन कर दें। सो उसके लिए उन्हें कंसल्टेंसी चाहिए कि कैसे हम और सारे डिपार्टमेंट्स को रिफॉर्म कर सकते हैं, कैसे उसमें इक्विटी इन्फ्यूज कर सकते हैं, कैसे हम इसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं। So, उसके लिए we are tendering and we are working with them, and I discussed with Mr. Nath sir as well. I requested, right? नहीं, इनकी तो छत्र छाया में मैं भी जब से इनसे मिला, इस वृक्ष के नीचे इनकी छाया भी, इनका फल फ्रूट भी, उसके पत्ते भी, उस पेड़ का सारा कुछ स्वरूप जो है, उस सारे के लिए तो मैंने इनसे ये कहा कि जब तक ये प्राण है और जब तक ये संसार है, हम कुछ ना कुछ ऐसा करें। और ये भी इन्होंने अपने पूरे मन से, अपने पूरी श्रद्धा से, जिस तरीके से हम अमेरिका से एक प्रोग्राम सुबह रविवार को करते हैं, आज रविवार है, प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान आते हैं और वो श्रीमद् भगवत गीता और जो भारत के मेन उपनिषद हैं उनके बारे में विचार करते हैं और बताते हैं कि वो आज की एजुकेशन और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ कैसे जुड़ा हुआ है और कैसे हम उसको देखते हैं। तो उसी तरीके से रविंद्रनाथ जी की बड़ी प्रैक्टिकल एक अप्रोच है कि बच्चे शिक्षा तो पा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के साथ उनको जब हम इस योग्य बना के उनको वहीं ना छोड़ दें, उनकी हैंड होल्डिंग वहां तक करें कि वो बच्चा एक मंजिल तक पहुंच जाए और एक ठीक तरीके से अपना कार्य शुरू कर सके। तो मैं रविंद्रनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूं कि ये आपको लेकर आए, और मुझे ये लगता है
मुझे ये लगता है कि मुझे एक दिशा मिल गई और मैं मतलब कहीं अधूरा था इनके बिना। और मुझे ऐसा लगता था कि शिक्षा की तो मैं बातचीत करता हूँ, लेकिन मैं फाइनेंस तो मैं जानता ही नहीं ना। फौज का आदमी गोली चला सकता है लेकिन उसको फाइनेंस नहीं आता है। तो मैं इनसे, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रहे, NSIC के मतलब इन्होंने कहा मुकाम तक, और इनका सारा। और जब भी मैं इनसे मिलता था बहुत सहज भाव से, बहुत प्यार से, और हर बार इन्होंने अच्छे से बताया कि थोड़ा वक्त दीजिए, वक्त आएगा और हम सब कुछ अच्छे ढंग से करेंगे। तो मेरे हिसाब से हम बहुत अच्छे से इस सारी चीज को आगे लेके चलें और बच्चों को हम उनकी मंजिल तक पहुंचाने की कोशिश करें। और भारत ही क्या, पूरे विश्व की समृद्धि में, तरक्की में, उन्नति में, और वसुधैव कुटुंबकम की जो बातचीत भी हम लोगों ने और आपने भी की, तो उसी के अंदर मुझे ये लगता है कि जो भी बच्चे, चाहे वो किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, या पॉलिटेक्निक में पढ़ रहे हैं, या ITI में पढ़ रहे हैं, या कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाए हम ICSI के वेब पोर्टल पर कि जहां पर जैसे सर ने बताया, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो वहां पर अवेलेबल हो। उसी तरीके से सबसे बड़ी जो तकलीफ है बच्चों को, उनको ये प्रॉब्लम है कि हम किसके पास जाएं, कहां से क्या लें, सब चीजें अलग अलग जगहों पर हैं। तो शायद वे व्यवस्थाएं बन रही हैं और प्रभु ही ये चाह रहे हैं कि उस डायरेक्शन में लोग जुड़ते जाएं। मुझे तो उर्दू भी नहीं आती है, फारसी भी नहीं आती है, हिंदी भी ठीक से नहीं आती, अंग्रेजी भी ठीक से नहीं आती है। एक दूर दराज किसी गांव के स्कूल में पढ़ के, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग आते गए और कारवां बनता गया। अब मैं इसको जरा थोड़ा सीखूंगा कि प्रॉपर उर्दू में इसे कैसे बोलते हैं। तो कारवां बन रहा है, अब लोग जुड़ रहे हैं और ठीक दिशा में जुड़ रहे हैं। और खासकर रविंद्रनाथ जी जैसे लोग पूरी डायरेक्शन भी दे रहे हैं। कल एक शाम को यूनिवर्सिटी आई, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी देहरादून के पास की, और वहां उनके पास 8000 बच्चे हैं। और कुछ कल बातचीत हुई जो इन्होंने अभी जिक्र किया थोड़ी देर पहले आपसे। तो आई थिंक हम उस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और हम इसको आगे लेकर चलते हैं। और आपके साथ हम बहुत सारा कार्य करना चाहेंगे, इन चीजों को लेकर चलना चाहेंगे। आज रात को 8 बजे मैं फिर से अपने ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि अमेरिका से डायरेक्ट टेलीकास्ट है। जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए पहली म्यूजिक परफॉर्मेंस और पहला इंस्ट्रूमेंटल वोकल और सिम्फनी दिया था जब वो प्रधानमंत्री बनने के बाद अमेरिका गए थे, आज रात को वो वही संगीत 8 बजे पूरे भारत को देने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़िए एक बार फिर कार्यक्रम में आज की रात 8 बजे। इन्हीं शब्दों के साथ दीपक गौर जी का, रविंद्र नाथ जी का और हमारे सभी श्रोतागण, सभी भाई बहन पूरे विश्व में जहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा विश्व में सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे, सब ठीक से रहें, सब पॉजिटिव सोचें और पॉजिटिव दिशा में ही आगे बढ़ें। इन्हीं शब्दों के साथ